Assalamu alaikum to everyone. This is Wasim Sajjad. In this video, we will discuss about ANF test of Shift 1. Let's begin. Question number 1. Choose the word that is near most similar in meaning to the capitalized word. Tirade. Synonym of tirade is angry speech. Next, choose the word that is most similar in meaning to the capitalized word. Philanthropist. Synonym is welfare oriented person. Question number 3. Choose the word that is near most opposite in meaning to the capitalized word. Transient. ट्रांजेंट का मानी होता है टेम्परेरी, कुछ अर्सा के लिए, तो इसका अपोजिट होगा परमानेंट. चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड. विर्चू. विर्चू का मानी होता है नेकी, खूबी, सिफ्त, तो इसका सिनोनिम होगा क्वालिटी. नेक्स्ट है जी, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. टू फाइट टूथ एंड नेल. राइट आंसर इज फाइट heroically till the end. Select the correct meaning of the idiom from the given alternative. Burn midnight oil. Right answer is work very hard. Choose the appropriate word out of the choices given below. Anthropology. Right answer is study of humanity. Choose the appropriate word out of the choices given below. Atheist. Atheist का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है वो है इनफिडल. फाइंड आउट द करेक्टली स्पेलिंग. तो करेक्ट स्पेलिंग है CURIOSITY. क्यूरोसिटी. चूज द करेक्ट सेंटेंस. नोबडी एवर आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन. नेक्स्ट है जी, शी मेड द बेबी टेक अ नैप. नेक्स्ट करेक्ट सेंटेंस है वी विल वेट इफ यू वांट टू गो. नेक्स्ट करेक्ट सेंटेंस है जी, his watch needed to be repaired. Choose the correct sentence, and this is there is no reason to worry. Last correct sentence है जी, had you not helped me I would have never gone to Lahore. Find out appropriate preposition to fill in the blank. The debate was dash the following week. Right option is adjourned to. Next है जी, choose the correct indirect speech of the following sentence. He says my name is Abdullah. Right option is he says that his name is Abdullah. He is a obedient boy. Obedient in the sentence is a part of speech में obedient क्वालिटी बयान की है, ये होगा एडजेक्टिव. नेक्स्ट है व्हाट इज द पंक्चुएशन मार्क यूज्ड बिफोर अ लिस्ट ऑफ नेम्स और एन इनुमरेशन ऑफ पर्टिकुलर्स. तो इसमें पंक्चुएशन मार्क यूज होगा कॉलन. अ होमोनिम इज अ वर्ड दैट इज सेट और स्पेल्ड एज. राइट ऑप्शन इज सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग. स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होगी लेकिन मतलब उसका डिफरेंट होगा. द डीपेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन. Pacific Ocean is also largest ocean of the world. Next है the United Kingdom consists of England and. तो राइट ऑप्शन है स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. अगर इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को शामिल ना करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन बनता है, और अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को इंक्लूड कर दें तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा. The longest river of Pakistan is Indus. The area of Karakoram Range is 77,154 square kilometer. Al-Biruni came to India with Mahmud Ghaznavi. The first man to climb Mount Everest twice was. Right option is Nawang Gombu. He belongs to India and he climbed Mount Everest in 1963
and 1965. Golden Triangle is the area where the border of following countries meet. Right answer is Thailand, Laos and म्यांमार. एंड पिछले जो हमने वीडियो उसमें सवाल था जी गोल्डन क्रीसेंट कंट्री कौन सी है, तो गोल्डन क्रीसेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान. द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड. Golan Heights belongs to Syria. The capital of Eritrea is Asmara. The largest producer of pig iron is, right answer is Russian Federation. ऑप्शन में चाइना नहीं है, अदरवाइज चाइना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पिग आयरन है. नेम ऑफ USA elected president is Joe Biden and he belongs to Democratic Party. Current Finance Minister of Pakistan Dr. Hafiz Sheikh. Name of current Chairman Joint Chiefs of Staff Committee of Pakistan General Nadeem Raza. Name of Afghanistan Intelligence Agency is NDS National Directorate Security. जो GID है ये जॉर्डन की है और GIP ये सऊदी अरेबिया की है और INIS ईरान की है. वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 March. ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब was started in 2014. The book Reconstruction of Religious Thoughts is written by Sir Allama Muhammad Iqbal, who was the first recipient of Nobel Prize from Pakistan. Dr. Abdus Salam, he got Nobel Prize in Physics in the year 1979. The first Muslim Nobel laureate was Anwar Sadat and he belongs to Egypt. When the Constitution of 1962 was abrogated, right answer is 1969. The first Chief Justice of Pakistan was Sir Abdul Rashid. The legal framework order was promulgated on March 30, 1970 by General Yahya Khan. Prime Minister Liaquat Ali Khan was assassinated on October 16, 1951. तरबेला डैम इज़ ऑन द रिवर, तो तरबेला डैम है इंडस रिवर पे और मंगला डैम झेलम रिवर पे. फैथोमीटर यूज टू मेजर साउंड इंटेंसिटी. टोटल नंबर ऑफ बैराजेस कंस्ट्रक्टेड ऑन इंडस रिवर इज़ 6. द हाइएस्ट पीक ऑफ कोहे सफ़ेद इज़ सिकरम. हरारे इज़ द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे, तो ऑप्शन में जिम्बाब्वे नहीं था इसलिए नन ऑफ अबव. प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ऑफ ब्रिटेन पॉलिटिकल पार्टी इज़ कंजर्वेटिव पार्टी. कायद-ए-आज़म वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1916 and he joined Muslim League in 1913. Indian civil service was introduced during the rule of Lord Canning and he is also the first viceroy of the subcontinent. Founder of Lodi dynasty was Bahlul Khan Lodi. Raja Dahr was the ruler of Sindh. How many amendments took place in Constitution of 1973? Right answer is 26. ऑप्शन में 26 नहीं था इसलिए none of these. Highest peak of Karakoram range is K2. The oldest seaport of Pakistan is Karachi. Novel War and Peace was written by Leo Tolstoy. What is the total length of coastline of Pakistan? Right answer is 990 km. The Battle of Plassey was fought in 1757. Jewish tribe
expelled from Medina after Battle of Badr? Right answer is Banu Kanuka. How many surahs start with Harufe Muqatta'at? तो 29 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन में 29 नहीं था। हाउ मच पार्ट ऑफ टर्की फॉल्स इन यूरोप? राइट आंसर इज़ 5%। व्हेन हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कॉन्कर्ड मक्का? 8 हिजरी। द लिटरल मीनिंग ऑफ शिर्क इज़ पार्टनरशिप। व्हेन डिड किबला डायरेक्शन चेंज? 2nd हिजरी। Umayyad dynasty start from 661 to 750 Anno Domino. Mughal Empire Aurangzeb Alamgir ruled the subcontinent from। तो दी गई ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आलमगीर औरंगज़ेब का जो इंतकाल हुआ वो 1707 में हुआ, तो उसका जो एम्पायर था वो 1707 तक रहा। हिशाम इब्ने अब्दुल मालिक इज़ फ्राम उमय्यद डायनेस्टी एंड ही वाज द 10th खलीफा ऑफ उमय्यद डायनेस्टी। व्हेन ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी? राइट आंसर इज 2nd हिजरी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डाइड इन 642 Anno Domino. Who constructed Mosque Zarar? Hippocrates. Jannat al-Baqi is situated in Makkah. Administration of Kaaba was handed over to Dash after death of Hazrat Abdul Muttalib Raziyallahu Ta'ala Anha. Right answer is Hazrat Abu Talib Raziyallahu Ta'ala Anha. Which Khalifa of Islam ruled the longest? Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anha. He ruled for the 12 years. What is Fateh Mubin? Fateh Mubin सुलह हदैबिया को कहा जाता है। राइट आंसर इज हुदैबिया पैक्ट। What is the real meaning of revealed books? Answer is guidance to humankind. What is the second name of Mosque Quba? Mosque Taqwa. When Hazrat Abdul Muttalib Raziyallahu Ta'ala Anha died? Right answer is 578 AD. What is the name of clan of the mother of Holy Prophet peace be upon him? Banu Zahra. What are the privileges vested to any accused after his arrest? Option 1 है engagement of lawyer. Option B है जी प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 hours फ्राम अरेस्ट। ऑप्शन सी है इंटीमेशन टू फैमिली एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। हाउ मैनी स्पेशल टाइप्स कोर्ट्स आर प्रोवाइडेड अंडर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997? राइट आंसर इज 2। विच प्रोसीजरल कोड इज एप्लीकेबल for prosecution of narcotics related offences? Right answer is Control of Narcotic Substance Act. How much quantity of narcotics is required to be recovered from accused for attracting section 9B? Right answer is more than 100 gram but less than or equal to 1000 grams. Who can grant physical remand of accused to the law enforcement agency? Right answer is magistrate. ANF headquarters is situated in Rawalpindi, Islamabad. Which are the offences where permission of court is necessary to arrest the accused? Right answer is non-cognizable. When the Control of Narcotic Substance Act 1997 was promulgated? 11th July 1997. When narcotics recovered from an accused quantity is more than 10 kg, then what would be the minimum punishment a judge can award to accused? Right answer is life imprisonment. In case of any doubt, benefit of doubt would go to accused. ANF works under
मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, ये ऑप्शन नहीं थी तो नन ऑफ दीज। विच लॉ provides the rule of determining the requisite criteria of evidence produced before court? Right answer is Evidence Act 1872. Regional Directorate of Punjab is located in Lahore. How many regional directorates ANF has? Right answer is 5. Where is ANF Academy? Islamabad. Anti-narcotics force was raised in 1995. 21st February 1995. What is the rank of force commander of a regional directorate? Right answer is Brigadier. Who is the current minister of ANF? Brigadier Ijaz Shah. PPC stands for Pakistan Penal Code and MOU stands for Memorandum of Understanding.